Your license. Okay. नमस्कार सभी देखने सुनने वालों का HCFI की ओर से मैं आपका दोस्त कृष्ण चावला और आज के इस कार्यक्रम 89th सेशन नॉन स्टॉप 89th सेशन का होस्ट सभी HCFI के मेंबर्स, RWS के मेंबर्स, टेक्सटाइल एसोसिएशन के मेंबर्स और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में वेडनेसडे सेशन 89th में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के रूप में डॉक्टर संगीता सुबुद्धि चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहेंगी, परंतु उससे पहले डॉक्टर कालरा हमारे आदरणीय स्वस्थ गुरु आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे कोविड अपडेट के साथ। उसके बाद मैं आज के स्पीकर को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर कालरा को कि आज के इस विषय का आरंभ करें। ओवर टू यू डॉक्टर कालरा। नमस्कार एंड वेलकम। धन्यवाद चावला जी। आप सब व्यक्तियों को मेरा नमस्कार और इस 89th वीकली सेशन में सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक पीडियाट्रिक चाइल्डहुड कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर होगा। उससे पहले हम जरा कोविड की स्थिति के बारे में चर्चा कर लें कि कोविड की स्थिति अब ग्लोबली और हमारे देश में क्या है। ये सब चावला जी स्क्रीन दिख रही है मेरी ना? जी जी दिख रही है, बिल्कुल क्लियर है। पूरे वर्ल्ड में एज पर दिस WHO वीकली रिपोर्ट जो कि 18 तारीख को वीक एंडिंग ऑन 18th of January और 16 तारीख तक का डेटा इसमें दिया हुआ है, जो WHO के 6 रीजन्स हैं। तो देखें इसमें इस हफ्ते जो है कंपेयर टू इससे पहले वाले हफ्ते में देखें, पूरे वर्ल्ड में लगभग 20% कोविड के न्यू केसेस की जो है ऑन एवरेज बढ़ोतरी हुई है। अगर डेथ देखें तो प्रोपोर्शनेटली कम है, सिर्फ 4% इस हफ्ते से कंपेयर करें तो प्रायर वीक से सिर्फ बढ़ोतरी है। और डिफरेंट रीजन्स में देखें, ये ओमिक्रॉन आज की तारीख में पूरे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो वेरिएंट है, लहर है, वो ओमिक्रॉन धीरे धीरे ये रिप्लेस करता जा रहा है डेल्टा को। और अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जहां से ये रिपोर्ट सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था और बहुत जल्दी ही ये बड़ा इस कोविड ओमिक्रॉन की जो है सबने देखा, बहुत तीव्र गति से ये फैला और थोड़े समय में ही काफी इसका ट्रांसमिशन देखा गया। जितनी तेजी से ये फैला था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उतनी तेजी से ही फिर इसका डिक्लाइन भी अब शुरू हुआ। इवन पिछले हफ्ते भी प्रायर वीक डिक्लाइन मोड में था। आप देखें अफ्रीका में इस तरह सिर्फ कंपेयर टू अदर रीजन सिर्फ 1% की न्यू केसेस में बढ़ोतरी हुई है और डेथ जो है -4%, डेथ 4% कम हो गई है। अमेरिका में जो पिछले हफ्ते काफी ज्यादा केसेस थे, वहां पर भी थोड़ी सी जो है केसेस तो बढ़े हैं पर उनकी स्पीड में थोड़ी सी चेक लगा है, कमी आई है सब रीजन्स में। अमेरिका में सिर्फ 17% केसेस बढ़े हैं और डेथ 7%। साउथ ईस्ट एशिया मैक्सिमम 145%, इंडिया एंड अराउंड में बढ़ोतरी की देखी गई और डेथ भी जो है 12% कंपेयर टू प्रायर वीक देखे गए।
वेस्टर्न पैसिफिक में 38% ओनली, और ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज में 68% जो है बढ़ोतरी, और 1% बढ़ोतरी इन डेथ में देखी गई। तो ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड में 20% इंक्रीज इन न्यू केसेस कोविड के, और 4% डेथ। पर तीव्रता इसकी जो है तो कंपेयर टू जो पिछले एक महीने में देखें, थोड़ी सी इसकी चक लगा है, पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। इंडिया में देखें हम तो ये पिछले साल से अब तक का देखें तो ये 17 जनवरी तक का ये डेटा इसमें दिखाया है। लगभग 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर केसेस जो है पर डे के एवरेज के हिसाब से भारत में अभी ये चल रहे हैं। कंपेयर टू सेकंड वेव तो देखें तेजी जरूर है, थर्ड वेव में तेजी है कि केसेस बहुत जल्दी तीव्रता से बढ़ रहे हैं, पर जो है ओवरऑल हम देखें, अभी आगे देखेंगे तो थोड़ा सा चेक लगा है कुछ राज्यों में। जो मेट्रोस में तो बहुत तेजी से ये फैला, दूर एरियाज में जो नॉन मेट्रो सिटीज है या रूरल एरिया है, उनमें अभी जो है इसका पीक थर्ड वेव का नहीं पहुंचा है, नहीं आया है। अब ये देखें तो पूरे कंपेयर टू सेकेंड वेव थर्ड वेव में डेथ डेफिनेटली सेकेंड वेव के कंपैरिजन में काफी कम है, और केसेस जो है ड्यूरेशन भी जो है कंपैरेटिवली देखें हम तो नंबर ऑफ केसेस कम है। ये 30 दिनों का देखें पूरे देश का, वो तो पूरा दिखाया था 1 साल का। इस ग्राफ में 30 दिनों में हम देख रहे हैं कि ये बड़े थे। 15 जनवरी को सबसे ज्यादा आए थे, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा स्पीड जो है न्यू केसेस की थोड़ी सी चेक हुई है पूरे भारतवर्ष में। अब ये देखें जैसे वेस्ट बंगाल में केसेस पहले बढ़े इन पिछले 1 महीने में, और पिछले 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं कि स्पीड केसेस जो हैं अभी नए रिपोर्ट हो रहे हैं, पर स्पीड थोड़ी सी कंपेयर टू प्रायर पिछले हफ्ते थोड़ी सी कम है। अरुणाचल प्रदेश में अभी भी देख रहे हैं हम, क्योंकि वो काफी दूर का एरिया है, नॉन मेट्रो एरिया ज्यादा है वो, वहां केसेस अभी जो है बढ़ रहे हैं पर डे। जम्मू एंड कश्मीर में भी कंपेयर टू मेट्रोस केसेस जो है पिछले महीने जहां सिर्फ 100-125 के आसपास घूम रहे थे, अब केसेस जो है वहां पर हैं, काफी हैं। और JNK में हम देखें आज की डेट में 4651 है, और 3 डेथ भी जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। गुजरात में बहुत तीव्रता नहीं है, पर केसेस अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं। गुजरात में जो है पिछले 24 घंटे में 17,119 केस नए रिपोर्ट हुए हैं और 10 डेथ हुई हैं। सबसे ज्यादा जो है वही महाराष्ट्र का देखें, महाराष्ट्र में देखिए जैसे पीक आई थी उसके बाद कुछ केसेस में अब पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से कमी आ रही है, पर आज फिर देखें हम, इसमें आज का डेटा नहीं है, ये 17 तक का इस ग्राफ में, आज फिर 39,207 केस महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं और 53 जो है डेथ्स है। दिल्ली में भी 2-3 दिनों से केसेस
डेफिनेटली थोड़े से जो स्पीड उनकी बढ़ने की है, बढ़ोतरी में थोड़ी कमी आई है। अब दिल्ली में जो है पिछले 24 घंटों में 11,684 केस हैं और 38 डेथ्स हैं। केसेस जरूर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं 10,000 से ज्यादा, पर जो स्पीड हम 15 तारीख को देख रहे थे, 13 तारीख को, 13 और 14 जनवरी में देखी थी, वो डेफिनेटली जो स्पीड है थोड़ा सा उस पर चक लगा है। ऐसे ही केरला में देखिए, केरला में भी जो है पिछले 24 घंटे में 28,000 केस जो है, 28,481 केस और 122 डेथ रिपोर्ट हुई है। कर्नाटका में भी जो है पिछले 24 घंटे में 41,000, मीन्स महाराष्ट्र से भी ज्यादा कर्नाटका में लास्ट 24 आवर्स में 41,457 केसेस, पर डेथ सिर्फ 20 ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जो है, जो इतने सारे केसेस देखने के बावजूद भी हम पूरे स्टेट्स का बेड्स ऑक्यूपेंसी देखें तो स्थिति काफी बेहतर है। ऑन एवरेज 84% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स जो थर्ड वेव के लिए तैयार किए गए हैं वो अभी खाली हैं। जो सेकेंड वेव में बेड्स की, चाहे वो वार्ड के बेड्स हों, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हों, चाहे वो आईसीयूज हों या ऑक्सीजन हो, जो मारामारी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, देखा सबने। अब थर्ड वेव में जो है काफी कंफर्टेबल पोजीशन है, तैयारी भी पूरी है, हम सीख भी चुके हैं, और बेड्स भी जो है, एडमिशन भी जो है इस थर्ड वेव में, जो कि बेसिकली डोमिनेटेड बाय ओमिक्रॉन, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम हो रहा है, सीरियस केसेस काफी कम है कंपेयर टू सेकेंड वेव जिसमें कि डेल्टा का ज्यादातर प्रकोप था। अब जो है स्टडीज जो कह रही हैं, जो दिल्ली में एक स्टडी हुई ILBS में जेनेटिक सीक्वेंस को लेके, लगभग 90 to 95% जो न्यू केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। तो ये वैक्सीनेशन की बात करें तो आज की तारीख में आज तक टोटल 158 करोड़ लगभग से थोड़ा अधिक वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड हो चुकी हैं लोगों को, और इस ग्राफ के हिसाब से लगभग 66% जो है पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन जो है, उसमें दोनों कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है, और सिंगल डोज लगभग 50% लोगों को अब जो है 47.7 में लग चुकी है। बूस्टर भी अभी शुरू हुआ है 10 तारीख से ही, वो भी आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 47 लाख के करीब जो है 0.3% लोगों को बूस्टर भी, जो प्रिकॉशनरी डोज इंडिया में कहते हैं, वो लग चुकी है। बच्चों में भी लगभग 49 से 50 हजार बच्चे 15 से 18 साल उनका भी जो है टीकाकरण हो चुका है। तो ये वैक्सीनेशन जो है, अभी भी कुछ लोग जो बचे हुए हैं जिनको अभी सेकंड डोज लगनी है या टोटली अभी वैक्सीनेटेड है, ये जरूरत है कि अभी भी समय है कि वो अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं। ओमिक्रॉन का केस देखें तो आज तक जो रिपोर्टेड केस है, क्योंकि हर केस में जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं होती है, तो जिनमें जेनेटिक सीक्वेंस हुई है, तो आज तक का जो वो कहते हैं, जिस तरह 8,961 केस ओमिक्रॉन के सैंपल्स में से पाए गए जिनका कि जेनेटिक सीक्वेंस किया गया, पर मेजॉरिटी सैंपल्स हम जानते हैं कि उनकी सबकी जेनेटिक सीक्वेंस नहीं होती है। ये था, इसको करें तो
कोविड के बारे में जो आज की दशा, और बच्चों में जो कोविड वैक्सीन अभी शुरू हुआ है, अभी तो 15 से 18 साल में कोवैक्सीन ही लग रही है। एक और वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हुई है भारतवर्ष में, जो जाइडस कैडिला की है, पर उसको अभी मार्केट में आने में लगता है कि थोड़ा सा समय और लगेगा। तो अभी तक जो है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन, जिसका कि ऑलरेडी ट्रायल बच्चों में हो चुका है, जिसका कि अप्रूवल भी आ गया है, वो इस टाइम जो है 15 से 18 साल तक के बच्चों में ये प्रोग्राम अब ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे ही जाइडस कैडिला अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, तो उम्मीद है इसको भी इस प्रोग्राम, बच्चों के टीकाकरण प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमने डिफरेंट स्टेट्स में देखा, जो हम सोचते थे पहले कि पीक कब आएगी, लग रहा है कि मेट्रोज में तो पीक ऑलमोस्ट ज्यादातर उसमें आने के बहुत ही करीब है, या कुछ में आ भी गई है, अब वो डिक्लाइन की ओर है। क्योंकि हमारा पैटर्न जो है इंडिया का अफ्रीका के पैटर्न से कंपेयर करें तो काफी सिमिलैरिटीज हैं, चाहे उसका वैक्सीनेशन स्टेटस हो, चाहे इम्यूनिटी लेवल हो, लोग नेचुरल इन्फेक्शन जो है कम्युनिटी में अफ्रीका का और इंडिया में लगभग समानता काफी है। तो जैसा कि अफ्रीका में, अब साउथ अफ्रीका में हम देख रहे हैं कि एकदम स्पीड बढ़ी और फिर डिक्लाइन शुरू हुआ, और हमारे यहाँ भी मेट्रोज में जो है, हमारी बहुत लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, मेट्रोज में तो हमने देखा कि पीक आई, और लग रहा है कि अभी जैसे पिछले दिनों में 2 दिनों में लग रहा था कि महाराष्ट्र में डिक्लाइन शुरू हो गया, पर आज केसेस काफी रिपोर्ट हुए हैं। तो 2-3 दिन का समय और या 1 हफ्ता बताएगा कि जो मेट्रो सिटीज के अंदर पीक का क्या स्टेटस रहेगा, और अभी जो है जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं, जो रूरल एरिया में हैं, जहां की अभी ये ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा पहुंचा नहीं है, फैला नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में, जैसा हम गुजरात वो देख रहे हैं, JNK और अरुणाचल प्रदेश में केसेस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, हो सकता है कि इन दूर दराज के और नॉन मेट्रो सिटीज में आने वाले समय में 2-3 हफ्तों में केसेस और बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वहां पर कमी शुरू होगी। तो ये जरूरी है कि अभी जो है सिर्फ 2 ही तरीके हम जानते हैं, इवन लेटेस्ट गाइडलाइंस एक और भी आई हैं ट्रीटमेंट की, गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल जो SOPs बने हैं, वो वेबसाइट, मिनिस्ट्री की वेबसाइट में है, 17 तारीख को नोटिफाई हुआ है। उसमें भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नया ड्रग ऐड नहीं किया गया। वही मेजॉरिटी देख रहे हैं कि इस वेव में लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड केसेस ही हैं, तो ज्यादातर जो है ऑलमोस्ट 90% तो घर में ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा है सिम्प्टोमेटिक तरीके से, कि जो सिम्टम्स हैं उस हिसाब से सिम्प्टोमेटिक उनका ट्रीटमेंट किया जाए। मॉडरेट और सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन कंपेयर टू सेकेंड वेव काफी कम है, पर उसमें भी वही ड्रग जो है ऑन स्पेसिफिक केस टू केस बेस पे, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो टॉसिलिजुमैब हो, वही स्टेरॉइड्स और एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीकोगुलेंट, वही चीज जो पहले हमने सीखी है वही है, नया कुछ उसमें ऐड नहीं हुआ है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल नया वाला, चाहे इवन मोलनुपिराविर अप्रूव हुआ है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंडिया में, पर इस नए प्रोटोकॉल में भी उसका जिक्र अभी नहीं है। मे बी कुछ से कुछ साइड इफेक्ट्स ज्यादा है इसके लिए कि, और इस टाइम जो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर ज्यादातर लोगों में नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स में अभी उसका भी उपयोग नहीं दे हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपना पूरा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ ध्यान अधिक और दें, ताकि अपनी और अपने आस पड़ोस में सबके लोगों की, समाज की सुरक्षा का ध्यान रखें विशेष, और अपना वैक्सीनेशंस, और लोगों को कन्विंस करिए, जिनको थोड़ी सी हेसिटेशन है, वो सोच रहे हैं कि अच्छा पहले आप लगवा लो फिर मैं लगवाऊंगा, तो उनको कन्विंस करिए कि वो अपना टीकाकरण जल्दी से जल्दी पूरा कराएं,
और बच्चों का भी जैसे अब शुरू हो चुका है, बच्चे 15 से 18 में तो काफी तेजी से आगे आ रहे हैं, उन्होंने अब टीकाकरण करवाया है। तो उम्मीद है कि अब छोटे बच्चों में 12 वर्ष से भी जो है, जैसे जायडस कैडिला की वैक्सीन अवेलेबल होती है मार्केट में, शायद वो भी गवर्नमेंट अब गाइडलाइंस उसके लिए भी इशू करेगी। ओवर टू नाउ चावला जी टू इनवाइट द स्पीकर। थैंक यू डॉक्टर कालरा। आज का हमारा विषय है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन। As you all know, and Dr. Kalra has also shared, कि vaccination in children has started. In view of this, we have been getting messages that we should have a session because mostly people are worried about their kids. As I usually say कि फैमिली में अगर एक सीनियर बीमार होता है, एक एडल्ट बीमार होता है, तो केवल वो एडल्ट बीमार होता है। लेकिन अगर कोई फैमिली में बच्चा बीमार होता है तो सारा फैमिली बीमार हो जाती है, बिकॉज इतना स्ट्रेस टेंशन सबको रहता है कि वो सारे ही बीमार दिखने लगते हैं। तो लोगों की डिमांड पर और आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने आज रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर संगीता सुबुद्धि को कि वो आज हमारे साथ ज्वाइन करें। वैसे तो संगीता जी हमारे से पहले से जुड़ी हुई हैं और मोस्टली लोग उनके विषय में जानते हैं। Still, there are many new joinees. They are joining us for the first time. So it is my duty to introduce Dr. Subuddhi to them also. Dr. Sangeeta is MBBS from Maulana and MD from UCMS Delhi. She has to her credit DNB. She has 26 years of experience and is presently senior consultant in Fortis and Bharatiya Vidya Bharatiya Institute, Sitaram Bharatiya Institute. She received President Appreciation Award from Delhi during 2009. She was the Secretary of South Delhi IAP in 2018. She is having a private practice in Vasant Kunj. She has interest in singing and gardening. So keeping this in mind, if time permits, I'll request Dr. Sangeeta to conclude the session with a song, provided you permit and there is a time. At the end of the session, we'll take the questions. You raise your hand, but Mr. Krishnamurthy will take your question at the end of the session. He's raising his hand right from the beginning. Over to you, Dr. Sangeeta. Thank you, Chawla ji. Thank you. Welcome. Thank you. So let me start the session right away. I'm sharing my screen. My screen is visible, no? Yes, it's visible. Yeah, great. So today I'm talking on COVID vaccines in children. Yes. जैसे कि डॉक्टर कालरा ने बहुत इन डेप्थ समझाया एंड वेरी नाइस प्रेजेंटेशन अबाउट कोविड अभी सिचुएशन जैसा है. थैंक यू डॉक्टर कालरा. नाउ सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन एक सिंपल तरीका है, इफेक्टिव वे, जिससे हम लोग सारे जनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं against any kind of harmful disease. So छोटा सा मात्रा हम बॉडी को अंदर डाल के उसके नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं. So उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस हो जाता है टू दैट इन्फेक्शन एंड इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है. हाउ डू द वैक्सीन्स वर्क? Vaccines train the immune system to create antibodies. Just like आपको infection आप expose हो गए और similar way, so antibodies create होता है without getting the disease per se. So when you get the vaccine, your immune system responds. It recognizes the invading germ just like the virus or the bacteria, and it produces antibodies. Antibodies क्या होते हैं? They are actually proteins and they produced naturally in the immune system and they fight the disease. They remember the disease and how to fight it. So suppose you are exposed to the germ in the future, then your immune system can quickly destroy it before you become unwell.
That's why vaccines contain only killed or weakened forms of the germs of viruses or bacteria, and they do not cause the disease or put you at risk of its complications. So why are vaccines important? Vaccines help against, morbidity, matlab being ill or mortality, that is dying from the disease. Vaccines achieve the herd immunity. Herd immunity का मतलब है सब लोगों में immunity होना in all the general population, and अगर सब लोगों में immunity आ जाए तो फिर transmission from one person to the person will be stopped. So once the person gets vaccinated, the chance of the infection is reduced. Why are vaccines important? Now, vaccines say we are lowering the possibility कि वो pathogen अगर community में spread हो रहा है, then the person will not suffer from the disease. And also, suppose there are circumstances कि कोई unwell है due to so many risk factors, by vaccinating the general population, वो सभी protect हो जाते हैं. Now let's talk about the types of vaccines. बहुत तरह के vaccines आने लगे हैं. एक है inactivated और weakened virus vaccine, जिसमें vaccine का वो जो power है वो weaken कर देते हैं. So it cannot cause disease, but it can generate an immune response. Then what are protein-based vaccines? They use harmless fragments of proteins that mimic the COVID-19 virus, and it can generate the immune response. Third तरीका है viral vector vaccines. Now, ये vector क्या होता है? Vector is a safe virus that does not cause disease, but it serves as a vehicle to take the coronavirus protein and generate the immune response. मैं आपको diagrammatically भी समझाऊंगी, but these are the kinds of vaccines that are used now in the market. Then there is the RNA and DNA vaccines also. This uses the cutting edge approach in which the genetically engineered RNA and DNA is used to create a protein that safely causes an immune response. So, ये diagram है. You can see the relative sizes of the different particles. बीच में है एक red blood cell, and you can see this particulate matter 10, particulate matter 2.5. ये है जो air pollution cause करता है. Then you can see the COVID, the coronavirus, how small it is, and this is the size which is filtered by the mask. So naturally, the COVID is protected. The person is protected if he is wearing a mask. SARS का COVID-2 genome decode हुआ था in January 2020, and तब से जो है vaccines काफी बन रहे हैं, different kinds. Now let's come to the mRNA vaccine. mRNA vaccine में देखो, this is the COVID virus, and ये जो T बना हुआ है, this is the structure outside, ये spike protein कहते हैं. Now the mRNA is with the instructions for making the spike protein. It is developed in the lab, right? And this is now injected in the cell, and it enters the cell. Then in the cell, what happens is that the COVID-19 spike protein is made, and then antibodies are generated
So when the person is exposed or infected by the COVID virus, then the immunity helps the person against the disease. Now, how does the vector vaccine work? Vector vaccine, again, the spike protein genetic material is extracted and put in the harmless vector virus. Then this is made into the vaccine and injected in the cell. And similarly, the spike protein is created and antibodies are generated. And again, you get immunity. Then we have the subunit vaccines. In that, the spike protein material is removed. It is injected into the bacteria. Then the spike protein is produced. And this subunit protein is then made into the vaccine and injected. Similarly, it induces the cell to form the spike virus T protein and antibodies are generated and it protects the individual against the COVID virus. So knowing the way different vaccines help or generated, now let's come to the Indian landscape. What are the Indian vaccines that are there in the market? The number one vaccine is the Covishield. Covishield is used by the chimpanzee adenovirus as the viral virus vector. And the Indian manufacturer is Serum Institute of India, the collaborator with AstraZeneca. The number two vaccine is the Covaxin. Covaxin is the inactivated virus vaccine. It has the Bharat Biotech is the Indian manufacturer along with the ICMR India. It has been made. The other vaccine which is also currently being used is the Sputnik V, which is having the human adenovirus as the vector vaccine. It is being manufactured by Dr. Reddy Labs along with the Gamalaya National Center in Russia. The other vaccines that you should know is, which is very soon going to be in the market, is the Zy-Cov-D, which is the DNA vaccine. This is the Cadila manufacturers along with the Department of Biotechnology, India. Then we have the other vaccines, which are very soon going to be there in the market in the next couple of months. That is the protein subunit vaccine. That is, the manufacturers are Serum Institute again, and it will be called Novavax. Novavax is the collaborator, that is the American company, but in India it will be called Covovax. Then we have the recombinant protein antigen-based vaccine. The human biologicals in Hyderabad are making, along with the Bayer College of Medicine, USA. Then very lately, you must have heard the mRNA vaccine has been launched by Genova, Pune. That is the first mRNA Indian-based vaccine. Then the other vaccines which are in the pipeline and very soon going to be there, that is by Bharat Biotech, the inactivated rabies vector vaccine and the Vesiculopax platform by Aurobindo Pharma. Now let's talk about the Oxford AstraZeneca, that is the Covishield vaccine. Now it is made along with the chimpanzee adenovirus vaccine. It's a vector vaccine, as you know. So the full length codon optimized coding sequence
along with this plasminogen activator is introduced. And sorry, something is missing here. So this was done by the Oxford and the AstraZeneca people, and all the 3-phase trials have been done, and after that it has been used in the Indian market since last January. And we can come to Covaxin. I will be talking about Covishield also in the subsequent slides. The next vaccine is the Covaxin, and Covaxin is an inactivated virus-based COVID-19 vaccine. It has been developed by the Bharat Biotech and the ICMR. The best desirable characteristic is that it's the ability to induce the T helper cell responses. And it does so very easily with an imidazoquinoline molecule, which is a toll-like receptor. This stimulates the cell-mediated responses in the body. So the same technique has been used for polio and hepatitis A. So this is a known technology. You can see the ingredients of Covishield and Covaxin here. In Covishield, the polysorbate 80 is the ingredient which can cause an anaphylactic reactions, whereas Covaxin doesn't have that. And in the side effects, you can see that many of the side effects are similar, like tenderness, pain, warmth, redness. These are local side effects that can happen. Some amount of fever, fatigue, headache, some nausea, vomiting. But these are minor, believe me. The ZyCoV-D is a DNA plasmid-based vaccine being developed by Cadila Healthcare. And the phase 2 trials are also conducted over 1,000 volunteers as part of the adapted phase 1-2 multicentric dose escalation randomized double-blind placebo-controlled method. And so even the phase 3 trials have been completed, and very soon they will be in the market. It has been formulated for a 3-dose schedule with needle-less applicator. The studies and the research is on for actually decreasing the amount of doses required. But let's see. This is how it will be looking. Then the Novavax vaccine, which will be known as the Covovax vaccine. It is a protein nanoparticle. It's been developed by Novavax, and it's described as a both protein subunit vaccine. And so it's created by, an engineered baculovirus containing gene. So this infects a culture of moth cells and it creates the spike protein. And these spike proteins are then harvested and then assembled onto a synthetic lipid nanoparticle and then injected. Now, how are all the vaccines given? Vaccines are given mostly as an injection in the arm. So even after getting vaccinated, keep taking precautions to protect yourself, family, and friends. Now, the COVID-19 vaccine is highly effective, but a small percentage of people will still get ill from COVID-19 after vaccination. I did not talk in detail about the the efficacy and the effectiveness of the vaccines. But in general, the efficacy is between
anything between 60 to 80%, and 100% against hospitalization and severe COVID. So you could also pass the virus on to others who are not vaccinated. Everyone should continue to distance, wear a mask, clean hands frequently, and cover a cough or sneeze and avoid poorly ventilated areas, which is called COVID appropriate behavior. Getting vaccinated is a safer way for you to develop immunity against COVID-19 than getting infected and sick. Vaccines are highly effective against severe illness and death caused by COVID-19 variants, including Delta. COVID-19 vaccines may be slightly less effective at preventing infection and mild symptoms caused by the Delta variant, but they are highly effective in preventing severe illness and death. So getting vaccinated can save your life and protect you from severe illness. So new data shows that COVID-19 vaccines help to stop you from picking up the virus and spreading it to others. So your decision to get vaccinated helps others too. We still don't know how long the protection lasts, but most people have strong protection against serious illness and death for at least 6 months. Immunity may reduce faster in people who are older or who have underlying medical conditions or who have a high level of exposure to the virus. To protect yourself, get vaccinated and continue practicing the other protective behaviors against COVID-19. So the typical side effects are tiredness and headache, fever, chills, pain or swelling at the injection site. In most cases, these are normal and last for a short time. If it lasts beyond 24 hours, please talk to your healthcare provider. Over-the-counter medicines like paracetamol helps. So all the approved COVID-19 vaccines have been thoroughly tested and all provide high degree of protection. It is important to be vaccinated as soon as possible and not wait. So you can see on the first day when the teenagers were allowed, on day one itself, 53 lakhs children had signed up and 41 lakh teens got the shots. So see, when we're talking about COVID-19 vaccination of children, there are a lot of arguments for and a lot of arguments against. So for, I will talk first. One is that it protects against COVID-19. It protects against severe COVID-19. The impact of new variants is uncertain. Protection against the inflammatory multiple, pediatric inflammatory syndrome, toxic shock syndrome, it protects. It protects against the long COVID variant. It contributes in reducing the community transmission. So there is avoidance of isolation, quarantine, school closures, and indirect harms of lockdowns. And there is a faster return to the pre-pandemic activity and economic stability. But what are the factors against? We consider that COVID-19 is generally mild in children. We are afraid of the of adverse effects. The long-term safety is unknown.
We don't know if the vaccine would cause the pediatric inflammatory syndrome. We don't know if the vaccine, the long-term safety issues are not there because it's a newer vaccine. The impact on transmission is also uncertain. A large proportion is probably immune. There is a limited vaccine supply. And because of the infection, the impact on routine immunization is already there. And it's a huge cost to the nation. So as you all know, the COVID-19 vaccines have been started for children from 15 to 17 from 3rd of January. I hope everybody has registered their children. Now, the talk is not complete before, as Dr. Kalra has already described about the Omicron variant. It's a very heavily mutated coronavirus variant. We are worried because more than 30 mutations are there. Will the vaccines work against it? Yes, because we have seen that patients who got the disease had severe complications if they were unvaccinated rather than the vaccinated proportion of people. And it's more transmissible. And currently, we know that, it's quite mild. So even after taking the vaccine, remember, mask, wash your hands, safe distancing. Please see that all people, especially elderly, have received their vaccines, and don't touch your face repeatedly. Stay safe. Thank you for your patient hearing. I have talked about the vaccines in general, but I'm very open to answering questions. Thank you. Thank you, Dr. Sangeeta. Now we'll invite question answers. And before that, there was one Mr. Krishnan who wanted to ask a question. I'll request Mr. Krishnan to kindly unmute himself and ask his question. If Mr. Krishnan is not there, anybody else, you may raise your hand. Please. Yeah, hello. Yes. Can I ask? Yes, please. Doctor, I wanted to ask on a specific thing. We all have been advised to take, not only children, to take the self-test. Okay. How much? What is the kind of a shelf life of a self-test? Because we suppose a person takes a self-test on a day, and it is not sure that the next day he will not be positive. First day it could be negative, second day it's positive. Then why are we insisting this kind of a thing? This is one question. And secondly, for children, why vaccine has been imposed? Like all elders, we have our own choice whether we could go for Covishield or Covaxin or any other Sputnik, etc. But why the children has been only given one kind of a vaccine, that is Covaxin? So let me answer the second question first. Yeah. At present, the Covaxin vaccine is the least reactogenic in terms of the two vaccines that are available. So keeping those reactogenicity and side effects in mind, the Covaxin has been preferred at present. We are getting 2 more vaccines for kids. The DNA-based vaccine that the Zydus Cadila-Wala, that's a DNA vaccine. And in a few months' time, we'll be getting the
protein subunit vaccines, which are highly purified and least, reactogenic, and actually more efficacious in terms of immunity as well. So that is why we have preferred this way in succession. Then I hope that was the answer you liked. The answer to the first one is the shelf life of the antigen kits. I'm sure it's mentioned on the packaging, but as you know, the rapid antigen kits have a lot of false negative value. So there is no need to do a rapid test before going for the vaccination. There is no recommendation as such. So if you feel the symptoms are there, then only go for the RAT that we call it. Otherwise not. Okay, and the third thing is, we've been talking about the CAB, appropriate behavior, etc. But recently we saw a billboard from Ireland saying the masks create germs. Any idea? Well, see, you must know that see what Ireland, this is many things get, unnecessarily, promoted by social media. And, in some places I'm hearing that even, mask is not needed anymore. But believe me, masking does help. It helps, like I showed you in my first slide, how small the virus is and how the mask prevents this size of the virus. So right now, fortunately, we know that the Omicron virus is causing mild symptoms. But if it was as harmful or harmful side effects like the Delta variant, then, it was only the masking that could have helped probably. And as you know, that children, constitute almost 30% of our population. So they were not vaccinated. So the only protection was actually masking only. Thank you, ma'am. Thanks, doctor. Mr. Krishnan, you have been raising your hand for a long time. Krishnan, please unmute yourself. Mr. T.N. Krishnan. I don't think he can. Okay. Keshavji, please unmute yourself and ask your question. Ji. Namaskar, respected Dr. Sangeeta. Hello, sir. So, one question goes that children are said to be a super spreader. Many doctors are saying that the super spreader. Should they use mask and up to what age they should wear the mask? Number two question, another question is that, say myself infected twice and I got 2 vaccines. Can I say that I have got 4 vaccination? Twice infected, 2 times, and 2 times vaccinated. Can it be interpreted that I got 4 vaccines? Okay. Okay. Coming to the first question, earlier it was said, like when it came to flu or any other virus, children were taken as super spreaders. That happens because, as children, the immunity levels are different, so they are not able to, clear the virus. So they keep the virus in the nasopharynx for a longer time. So that is why they are called super spreaders. So that was the initial thought when they stopped schools and colleges, that they will be transferring very easily in the community. This was the thought. But now it is seen that, probably it's not the case for COVID in general. Then now there are guidelines for telling for in India for the masking. So they are saying that under 5 children
cannot wear masks because of inability to breathe, or they're big and stuff like that. But CDC and WHO says below 2. And coming to your third question, it is said that suffering from a COVID infection, the natural infection doesn't give, a long lasting immunity. So that is why the vaccination was indicated after, that 3-month period of after COVID infection to get the vaccination. So the vaccination is able to stimulate the cell-mediated immunity far better than the natural infection. So I will say you are still double vaccinated only, sir. Mr. Krishnan, do you want to ask Hello? a question? Yes, Hello? ask your question. Yes. Hello. Yes. Good afternoon, ma'am. ये ओमिक्रॉन वायरस आते जाता है, कब तक ये ठीक होगा? क्योंकि हमको पता नहीं, बहुत पीपल डर रहे हैं इससे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कोयम्बतूर से। कोयम्बतूर। ओह, ओके, मेरे पास कोयम्बतूर के तो सारा डाटा नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है Here near about 2238 status now, कोयम्बतूर केसेस। ओके, सो अभी आपका रैपिडली बढ़ रहा है। सो देखो, मेट्रोज में सबसे पहले बढ़ना शुरू हुआ है, राइट, एंड बाकी सारे एरियाज में अभी स्प्रेड हो रहा है, राइट। नाउ जो हम डाटा कह पाते हैं, लाइक सीइंग द फर्स्ट मेट्रोज, इज दैट रैपिड एकदम बढ़ रहा है, लेकिन अभी पीकिंग पे आ रहा है, राइट, एंड देन वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुआ है। दिस इज द वेव जो कि अभी महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली का फिगर्स देख के बता रही हूँ। सो अभी धीरे धीरे बाकी सिटीज में अभी स्प्रेड होना, अभी पीक पे चलना शुरू हो गया है। सो वेरी सून यू विल सी थोड़ा सा कम होना और पीक होना, मतलब प्लेटो होना शुरू हो जाएगा। जोशी जी, ask your question please. मैम नमस्कार। जैसे मैम मैडम ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड होने के 3 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करना है। मान लिया किसी को कोविड हुआ है, वो या तो बिना सिम्टम के हुआ है या वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, और उस बीच में उसका वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर क्या इसका परिणाम होगा? अभी देखो, अगर कोविड हो गया है, सपोज आपको पता चल गया कि कोविड हो गया, आपने फाइंड आउट कर लिया, तो कायदे से गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीनेशन आप 3 महीने बाद कीजिएगा, राइट। नाउ अगर आप अभी जो ओमिक्रॉन का जो वेव चल रहा है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड इज समथिंग बिटवीन 2 to 3 days। ओके, नाउ इस बीच में भी अगर आपको वैक्सीनेशन कर दिया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको पता नहीं है, आप वैक्सीनेशन के लिए गए या वैक्सीनेशन सेंटर में ज्यादा क्राउडिंग और आप एक्सपोज हो जाए, ये सब पॉसिबल है। थियोरेटिकली इट हैज हैपेंड आल्सो इन द पास्ट। हो जाए तो फिर आपको उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। डॉक्टर संगीता, आजकल इस मौसम में बच्चों को बहुत जल्दी, जैसे सर्दी गर्मी ये चलता रहता है, खांसी जुकाम फीवर कॉमन होता है, तो उनके लिए इस समय, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये कोरोना है या नॉर्मल फ्लू है, सो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेरेंट्स को लेना चाहिए? एक्चुअली अभी सबसे ज्यादा इन द कम्युनिटी हमारे लिए अभी ये ओमिक्रॉन का कोविड चल रहा है फिलहाल। इट इज सो सिमिलर टू द सर्कुलेटिंग फ्लू सिम्टम्स जो चल रहे हैं ना, फीवर्स, कफ, कोल्ड, स्क्रैची थ्रोट, वॉमिटिंग, डायरिया, जनरल बॉडी एक, हेडेक,
बिलीव मी, सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं एकदम हमारे फ्लू की तरह, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कोविड है। अभी सबसे ज्यादा हमारा टेस्टिंग कोविड पे चल रहा है, एंड एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड लकीली ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग ब्यूटिफुली 3 to 4 days, and they are bouncing back to normal. Chavla, can I ask one more question? Please go ahead. Yeah, doctor, there seems to be a slight difference between different doctors during this Omicron days. When somebody gets cough, etc., some people are prescribing that antibiotics to be given, and some doctors have said not to give antibiotics. I mean, what's the correct way of administration? So the correct way is actually, if you have a documented COVID in your hands, then antibiotics are not to be prescribed. Okay. Okay. It doesn't fall into the treatment at all. Oh. Thank you. Thank you, doctor. When it becomes necessary to hospitalize a child, We have certain guidelines, right? Which I tell all my patients, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा टेली कंसल्टिंग चल रहा है. I'm sure many of my doctor friends will concur. I give them a broad warning points. If the fever is going beyond 104 after 4 days, 1. Number 2, there is breathing difficulty. If there is unnecessary or unusual fatigue, if the child is vomiting too much, if the pulse oximeter reading is going below 95 or 94 generally, these are the reasons to admit or do more testing. डॉक्टर, जिस समय गर्मी होती है और बच्चे को बुखार ज्यादा होता है तो जनरली वो कहते हैं कि उसको नॉर्मल वाटर में बाथ दे दीजिए, एक डिप कर दीजिए या पानी डाल दीजिए। पर इस विंटर में जो वेस्ट में इस समय जो इस एरिया में इतनी सर्दी चल रही है, इज इट एडवाइजेबल टू गिव अ बाथ? I tell all my patients to give a bath in the normal lukewarm water, जो normal नहाते हैं, not कोल्ड वाटर। हाँ, not cold water, lukewarm water, जो normal bath लेते हैं। उससे क्या होता है? 2 things. One is the heat dissipates the fever. Number 2, it makes a sense of comfort. After a bath, the child is much more comfortable. Irritation कम रहती है। तो 2 चीजों से फायदा ही होता है। रमा खन्ना जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। रमा खन्ना जी। Sir, ma'am, as you have said that the children keep the virus in nasopharynx for a longer time. Now at present, I am also suffering from COVID. Today is my 7th or 8th day, and my nose is also not getting dried. That means still the virus is there. See, it has been seen that the dead virus can be there even for up to 3 to 4 weeks after COVID infection. It's not necessary that it will be, causing COVID to the other person. Remember that. The virus can be still excreted, but it can be dead later on. But RT-PCR will be positive. Yeah. RT-PCR can be positive for even a month after the infection. Now it is not necessary to do RT-PCR at the end of treatment, isolation or anything. Right, ma'am. Okay, one last question from Krishna, and he's Hello. fast. We had heard that no mask, no vaccination required from in Europe. They are saying they are treating as flu. Yeah, I also saw those forwards. Basically, they want the whole population to get the herd immunity to the Omicron.
I suppose, you know, we can't afford to do that in India. Okay. Every good thing has to come to an end. Lekin I promised that Dr. Sangeeta is a very good singer. So before she signs off, I'll request her to give a small song to all of us, one small song, even if 2 stanzas are enough. If you feel comfortable, please. Sure. I think sure. everybody agrees with me. Thank you all. So I'm singing this song, Mujhko Apne Gale Laga Lo, a very beautiful song. मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरी हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। जब तुम मुझसे दूर होते हो जिया मेरा घबराता है, नींद आँखों से उड़ जाती है, चाँद गंदर सता है, दोनों पहलू जल जाते हैं, आग में आग लगाता है, जैसे तड़पे बिन जले मछली प्यार मुझे तड़पाता है, प्यार मुझे तड़पाता है, इस उलझन से मुझको बचा लो ऐ मेरी हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरी हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। सेकंड स्टैंजा सुना दो ना। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं, दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं, तुमको छूकर पवन चकोरे खुशबू लेकर जाते हैं, लेकिन हम तो देख के सूरत बेथामे रह जाते हैं, बेथामे रह जाते हैं, दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। थैंक यू। हर बीमारी में, हर तकलीफ में, हर दुख में म्यूजिक का अपना रोल रहता है, और कितनी भी Thank you very much, madam. सब चीज के साथ Thank you very साथ, much, madam. थैंक यू। और अगर हम उसको संगीत से, म्यूजिक से जोड़ दें, मैं इनफैक्ट आई एम सर्चिंग फॉर ए डॉक्टर, आई हैव रिक्वेस्टेड 1 or 2 डॉक्टर्स दोज हु सिंग, कि हमारा एक सेशन म्यूजिक पर लें, कि म्यूजिक किस तरह से हमारे दर्द को, पेन को, बीमारी को कंफर्ट्स देता है, और उसको किस तरह से हम, जिस तरह से फिजियोथेरेपी, दूसरे
पैरामेडिकल चीजें हैं जिनसे हमें पेन में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में आराम मिलता है, तो संगीत भी उनमें से एक है। तो होपफुली आने वाले दिनों में हमें कोई सेशन डॉक्टर संगीता या कोई और इसको देंगे। तो आपका सभी का एक बार फिर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी। See you all next week, Wednesday, same time, same Zoom session, same Zoom link. All the best till then. Namaste. Thank you. Thank you Very very much. nice, Dr. Sangeeta.